ऐसा तो नहीं। लैंग्वेज में वो तो ऐसा नहीं चल सकता। जो सेवा ने ये किया मतलब सेवा कौन है? हमने ये किया। सेवा के मेंबर्स ने ये लड़त करी, ये कुछ पाया, ये घुमाया, ये अनुभव हुआ, तो दैट इट हैज टू बी वेरी क्लियर। I mean, Seva's goal is full employment and self-reliance. But Seva's goal is full employment. Full employment इसका मतलब ये नहीं कि सेवा full employment देगी, है ना? सेवा मतलब सेवा members goal is to attain full employment at the household level from from various forces, from the existing mainstream. It may be world of work, it may be world of finance. तो ये लैंग्वेज में वो आना चाहिए। पर वो सोच में आएगी तो लैंग्वेज में आएगा। हाँ, कितना वर्ष है? 22 साल का। 22वां वर्ष 40। तो 25 साल को उसकी उजवनी करो। हाँ, करेंगे। 25 साल तक काम करूँगी। ये भी एक चैलेंज है, नियमित रूप से एक मासिक निकालें। नहीं, हमको बहुत शायद इसलिए भी होगा कि फील्ड में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फील्ड से जुड़े ज़्यादा नहीं, इसलिए भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत नहीं। आपका जब पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो सोच में आती है कि ये आपको आप कैसे वो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। एक बहुत इंडिविजुअल लेवल के जो बहनों के अनुभव हैं उनको पूरे विचार के साथ कैसे जोड़ते हैं, वो उदाहरण कैसे बढ़ते हैं और इससे वो विचार कैसे मजबूत होता है और पूरी जो आप काम कर रहे हैं उसको भी मतलब सपोर्ट करता है। 1-2 महीने में एक आध बार जाओ ना। हाँ, तो फिल्में होने से एकदम आपको प्राणवायु मिलेगा। हाँ, अभी सोच रही हूँ कि ये इंदौर से मैंने यहाँ शुरू किया वैसे भी है। अंशुआ के सिवा भी कुछ लिखना होगा ना। हाँ, तो भी एकदम उसमें से ये आएगा। पर कम से कम भोपाल में भी I'm just suggesting if you can do somewhat investigative from there, ये क्योंकि भोपाल के न्यूज़पेपर में आप जो पढ़े तो उसके जानकार किसी एक दो से आप कि आपको अपना है वो भी बात करके आप बात करते रहो। जो भी मिले ना उससे हम बात करते रहो। ये सब्जी है तो सब्जी कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से लाते हैं। तो ये होलसेलर का जो मार्केट है वो सरकारी मार्केट है, सरकारी है। कभी उधर जाके फिर दूसरे वालों को भी यही पूछो। तो then you will have some idea. Then someday you visit that wholesale market, vegetables का। फिर आप तो सर्जक है तो you will get lot of things. उसमें से स्टोरी भी कितनी बन सकती है, कविता बन सकती है, इतिहास बन सकता है। आप बोलते थे कुछ में अच्छा सीखने को मिल रहा है, वो सब ऐसा ही बोलते थे। तो हम लोगों को सीखने को मिलता है आपसे, तो तब हमको सीखना मिलता है। इतना सच है। लेकिन क्या है We'll miss this boy. Yeah, we'll miss this day.
Miss misspelled also will be missing. कुर्सी पर एवी बैठी છે જાણે સિંહાસન પર બેઠી Full stressed. Ramesh, my favorite. મરચા જો મોટર રિક્ષા કેટલી બધી વસ્તુ વધુમાં વધુ બધું એક સાથે છે. That's the charm. લાલ મરચા પણ છે, મસાલા પણ છે, પ્લાસ્ટિક બી છે, ઊંચી એડી પણ છે. What was the last straw? What was the last straw? Last straw was buying they're on the wheels, Acha, हाँ, buying something from the roadside. The middle class family, upwardly moving. Those who are maybe are thinking where to go to the mall or stay here. No, they always look for something cheap, fresh. શું જેમને જોઈએ? સસ્તું, તાજું, નમતું અને ઉધાર. नमतू केवा? झुकता हुआ Little more. थोड़ा अधिक थोड़ा कम नहीं झुकता हुआ इधर ही झुकता हुआ એની જોડે લડી લડીને क्या भैया जी थोड़ा सा तोड़ डालो सोने की तरह तोड़ रहे हो સરસ છે. इसका कॉन्टेक्स्ट में what is fresh? Title. And people look so happy and active, and somebody smoking bidi and somebody Relaxing. Yes, embracing. Yeah, relaxed everybody. What is missing is a policeman around. Actually, we saw two policemen Did who you? were also buying. Oh. We made that shot, but No, but you should have waited. कि वो पैसा कुछ देता Till he है कि paid. ऐसे ही लेके जाता है I mean, that wait will be forever. It's such a magical thing. You know, in the morning there isn't anything there. It's an ordinary roadside. And then suddenly people start gathering and there's this everything which you need for your life. Every possible thing. You know, all the masalas and
कपड़ा Sabji, सब kapda, And, chapel. and this vending is called encroachment. Yeah. And then, parking cars is it's not encroachment. They are actually running the cities. Oh. Yeah. No, they are these. They are the central. Center of the urban economy. How much? If you count their total turnover, then how much they are pumping into the local urban economy, and how many lives survive on that? There is so much of human aspect. When you go to a mall, for example, a cold place, everything voiceless. But do you think the middle class will care about any such fight to retain this space? But have you tried to influence them? Is there a possibility? Yeah, of course, why not? You see, I think for the middle class, the thing is that things which are being sold in the malls are also new. So there is this attraction for the new, of course. But at the same time, it's the middle class which also has its memories of this heart and that kind of things. So I think it's actually the middle class which is truly in position to see both ways and. Well, I think that we also should not have prejudice about the middle class, as we should not so much glorify these markets. The times are changing, so we have to accept that reality. We should have a good study done that what are the preferences of the middle class. We should know that do they want to save time, do they want to be up with the Jones, or that do they want really I have to buy the best standard products. They are ready to pay more for that, or that whether there is a parking problem that is getting solved if they go to a mall or supermarket. So we should have. There are such studies. So tell your university students and graduates and postgraduates in your economics department and the market department to have such studies. Similarly, these markets also need to be cleaner, and they also need certain uh, better environment in terms of course, hygiene, but also they can be provided cold storage, toilets, drinking water facilities for them, and then all that can be can be if you just accept them and then recognize them as part of the downtown central economy and the market, and then if you accept them as the mainstream, part of the mainstream market, then I think we can think a lot about that. So tell your, town planners, young town planners, graduates, and then show them these things. So it has a message, but it has to be put in a context. So help uh, help the bankers, uh, or that urge the bankers. So if you put this into the context of banking and financial services, there should be a counter, 2 or 3 such counters of daily collection of savings for the bank. So I don't mean the touts. So there are plenty. Similarly, for the town planners, influence them, influence the policymakers in the corporation. You should ask them how much they have been fined.
every day. How much do they earn? How much do they, borrow? At what rate of interest? And then how much goes into their into paying the fines and bribes? And all that is collected in terms of fine and bribe. We don't know, but fine that is charged to them is official. Where is it deposited? Where is it accounted for in the municipal budget? And then why is it not being spent for their providing them different facilities? And, but the main thing is recognizing them as part of the economy. That's the reason. I think you've been asking about middle class wanting this market or not, but also this can be a question whether, given a choice, these people would like to stay here in this market or would like to go in a building, let's say. I think we should respect the concept of natural markets, because wherever there is a need of buying, natural markets emerge. Markets emerge naturally in terms of vending goods and also services. So we should recognize that the concept of natural markets, and that concept is being accepted in the national policy for street vendors. I think this is a huge potential for bankers. But then bankers will not finance them until they are made legal. They are there for so many years. So आज वो दाड़म वाला मिला था. He has been there at that step of that restaurant for 7 years. महाराष्ट्र से आया था, खुशी से काम कर रहा था. He was efficient. तो दाड़म के दाना निकाल रहे थे. तो so if you have given them loan, it's not at risk. So even the restaurant wala will also be supportive. So if those people are given loans, how can you call them illegal? Is vending illegal? How can vending be illegal? How can you call them illegal to those who are selling, who are earning their livelihoods? With honest hard labor. How can we just dismissed as illegal? So there is something wrong somewhere else. Basic rights. Constitution has given them right. Right to earn one's livelihood, right to work. It's a constitutional fundamental right. I think you're very right that we haven't somehow accepted them as part of the mainstream and the actual work which they are. Charles Correa, since our Manekchok Ladat, there was one post Manekchok discussion. और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मानेकचौक का केस का फिर जजमेंट आ गया उसके बाद तो since then Charles Correa has been always accepting them. अच्छा, हम लोग ये स्लाइड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा जैसे मॉल स्ट्रक्चर है आज का दिन में और जैसा आगे का दिन में होने वाला है उसमें क्या इनका कोई जगह होगा, क्योंकि पहले तो यह है कि जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे ज़मीन ही छीनी जा रही है. अभी कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल जो प्लानिंग हो रहा है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग का जो नया है मोल्ड, उसमें तो ये लोग रहेंगे ही नहीं शायद इतने संख्या में जाके उनको कलेक्टिव के बारे में हम बात कर सकें. तो इसके बारे में आपका जो मॉल अब सोच रहे हैं हम लोग इसके बारे में, उसमें ये नया चेंज सिचुएशन में
उसका क्या चेंजेस या क्या कुछ हो सकता है उसमें? देखो ये जो सी चेंज आ रहा है उसमें गरीबों को डूब जाना है या तैरना है। कई जो बहुत छोटे होंगे वो तो डूबेंगे और उनको जहाँ तक सरकार खुद अब सरकार के सिवा और कोई उनको बचा नहीं सकते। तो जो भी इस प्रवाह में जो छोटे जो डूबने वाले हैं उनको सरकार को उठा लेना चाहिए। ऐसी पॉलिसी के लिए हमें हमें बहुत दम मारना चाहिए। पर सबका अगर सभी का अगर सरकार के ऊपर छोड़ दिया तो वो कभी नहीं होने वाला है। तो जिस तरह सरकार ने बिलो पॉवर्टी लाइन एंड देन नॉट सो पुअर का अलग कर दिया और जिस तरह से सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर बीमा हो या शिक्षा हो या आरोग्य हो तो उसके लिए सरकार खुद देती है। उस तरह से इनको इनका रिहेबिलिटेशन का कुछ भी करना चाहिए। I mean, there can be several ways of doing it. बाकी को अगर उनके अगर जिनको मदद नहीं करेंगे तो उनको तो अपने आप को कुछ ये करना पड़ेगा। तो अभी मॉल स्ट्रक्चर भी है फिर ऐसी जगह हो जहाँ नेचुरल मार्केट्स बनने वाला है कि जहाँ नई कॉलोनीज बन रही है तो वहाँ एक ग्राउंड इनके लिए दिया जाए और वहाँ पर वो अपनी लारी खड़ी रखे या जो तो उसके लिए जो टाउन प्लानिंग है उसी में हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो और आगे चल के जो अर्बन प्लानिंग की जो स्कूल्स है तो उसी में भी हमको ये इंटरवेंशन करना पड़ेगा कि देखो जब हम शहर का प्लान कर रहे हैं तो उसी में सारे इन्फॉर्मल सेक्टर वाले को फिर बाजार वाले को नेशनल मार्केट्स वाले को भी बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए, इनके लिए प्रोविज़न किया जाए और फिर काफ़ी तरह तरह के डिज़ाइन इनके लिए तैयार की जाए और उसी में भी इनकी राय ली जाए और उनका पार्टिसिपेशन भी हो, इनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन भी हो क्योंकि ये सब आकर करके तो व्यापारी हैं तो वो समझते हैं इनकी साहसिकता भी है, ये लोग मजदूर नहीं है इसलिए कुछ नया जो आ रहा है उसी में फ़ायदा लेने के लिए वो तैयार भी होंगे, थोड़ा चेंज होने के लिए भी तैयार होंगे और फिर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, पूंजी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हमारे बैंकों को भी तो आगे आने चाहिए और फिर बैंकों अगर इनको ऋण देंगे तो फिर वो बहुत जल्दी से उठाएंगे। तो सारे समाज के और अर्बन रिन्यूअल प्लान का जो पूरा ढांचा है उसी में पार्टिसिपेटिव जितना हो सके उतना करना चाहिए और वॉलंटियर स्टूडेंट्स particularly students of different professional institutions can really play a good part. क्योंकि कोएक्सिस्टेंस की बात आप बोल रहे थे कि ऐसा हम तो ऐसा एक सोसाइटी ऐसा इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और देखना चाहते हैं जिसमें बड़े स्ट्रक्चर्स के साथ छोटे स्ट्रक्चर्स अनऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड सो टू से वो चीज़ें भी कोएक्सिस्ट कर सके उनका लिबर्टी लेके उनका फ्रीडम लेके। तो आप ऐसे जब जो आप बोल रहे हैं अभी तो इट्स एकदम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही फार्मिंग और सारे प्रोडक्शन का इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही सारे वो चेंजेस शुरू हो सकते हैं और ऐसा ही कि आप कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, सो मेनी टाइप्स बोले रिक्शा भी है और साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है,
स्कूटर के भी कितने प्रकार हैं और बस भी है। तो जब जब रोड्स बनाए जाए तो तब ये हर एक के लिए को एग्जिस्टेंस उस तरह से प्लान किया जाए कि हर एक के लिए की जगह हो। ऐसा नहीं कि ये चलो प्राइवेट गाड़ियों के लिए है, कि हम औरों को हटा दे या बसों को हटा दे और क्या और प्राइवेट टैक्सी को ये कर। तो प्राइवेट टैक्सी का भी देखा जाए। ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमीज, ये सब हमें डेवलप करनी चाहिए, फ्लरिश होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही मॉडल है भविष्य के लिए। और हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जहाँ ये हो सकता है। Is it worthwhile, you think, to invest in some strategic planning, which also means, जैसे कि मॉल अपनी स्ट्रक्चर को, अपने प्रोडक्ट को, सब कुछ को और हाइटन सेंस ऑफ एक्विजिशन देने के लिए बहुत कुछ करता है, उसी तरह क्या इसको जो हम अपने सब्जी मंडी को वहाँ ले जा रहे हैं, जो ये लोग ही जा रहे हैं, उसकी पूरी एस्थेटिक, उसकी पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन, वो सब कुछ को कितना कंसिडरेशन में लेना ऐसा ही करेंगे। So much so open, so it will be hopefully, so we have still to confirm the design, but it will be more or less like दो टोकरी की जगह नॉर्म एंड देन ओपन, फिर बाहर चौक में तो खुली जगह है तो वहाँ पर सब होलसेल। तो फिर लोग जो है तो वो माल लेके आएंगे और साइड में उसी को सॉर्टिंग होगा और वो सब मेंबर्स ही होंगे। खेडूत मार्जिनल फार्मर्स जो सब्जी उगाते हैं वो भी अपने ही मेंबर्स होंगे और वो वहाँ बैठ के फिर करेंगे। और थोड़ा इस तरह से क्योंकि मिडिल क्लास बायर्स आर गोइंग टू बी मिडिल क्लास, तो इनके लिए एक कुछ कॉर्नर रखना पड़ेगा कि कुछ काउंटर जैसा, बट in the way that they have been selling in the market. There's an allegation. There's an allegation mainly by people who are doing structured politics or into academics that although India has a vast population of people, I mean, the population is staggeringly huge, but still there are not so much of political consciousness of that particular kind, so that they could, knowing the rights and making some changes in order to bring those implementation and changes happen and all that. What do you, as a person who's been working in this with the people for so long a time and with so much of a cross section, how do you react to that? I think politically conscious of nothing. When I go to America, USA, Canada, there I see a very low level of political consciousness. When I go to Europe, I do find they are quite politically conscious. Particularly, I have met with women. Southeast Asia, the politics has taken a negative, corrupted. Politics has taken a central stage. But so that way, India, Indians, they are conscious about politics in the sense that what is happening at the central level, state level, at the district level, and many of the men particularly who read newspapers of different kinds. You see, even every pan wala has newspapers. People stand there, read them. As Gandhian, I believe that there should be decentralized power to decide, to take decisions, and there should be decentralized distribution of
resources, then only you can do something. You need power to decide, and also the resources to use it. I'm not talking of only financial resources, but all other resources as well. So the decision making is happening so far away, and now almost those, I mean, 7 powers or 8 powers at the global level who decided whether we should eat rice or whether we should eat wheat, or who decided what drugs we should take, even, I mean, when we have fever, or that so in what language we should teach our children in a school as a medium. So all these things, so it goes all the way to the designing and planning of our cities, of our industries, of our, I mean, different systems, banking systems, financial systems, planning systems, even, I mean, researches are being, the educational institutions are being asked to be raising their own revenue. Could we, think of, or is it possible to think of a parallel economy which bypasses also to a certain extent this aggressive, exclusive economy, which is basically against interests of those who are the sustainers of this economy? Can we think of that? I mean, using the internet, now that it is there, it's possible to make connections like all over the country itself, and So what we have to develop is a countervailing force to the existing forces. Nobody can stop what is happening at the global level or at the mainstream level. But in the mainstream, within that, we have to first to enter that, then to stand, I mean, to be able to make your presence felt in the mainstream, and then be able to stand firm in that competitive market. So market, when I say market, policy, all of that, governance. So within that, when when we reach that stage, we will be able to then maneuver, you know, I mean, some policies, in terms of intervention, in terms of changes, and hopefully then we will have enough, I mean, bargaining power to change or to bargain about land, about resources, about capital, about, markets, about the city planning, whatever that. For that, we are too weak. We are too weak. We must go on influencing the policymakers, the academicians, as much as possible on these lines. They are also human beings. They will also think about it, because idea is the most powerful thing. I mean, once an idea enters into your mind, it goes on. Uh, so it makes the person restless. So how to get into those ideas in the minds of of academicians, of politicians, of if yeah, I mean, we don't want to get drowned in this. We have to survive, and we have to survive, and at the same time we also have to swim over the tide. So it's an ongoing thing. मीडिया किस तरह का पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, जो कि हम उसे करते हुए नहीं देखते हैं अक्सर. इट्स मोर ऑन इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कंसेंट अबाउट थिंग्स rather than breaking the myths, actually the stereotypes generally. तो वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या ये जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक भी हो, ये अगर हम ये माने कि ये लोग कोई ऐसा
ट्रांसपेरेंसी के साथ और कुछ ऐसे अर्नेस्ट एफर्ट के साथ ये काम करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि होता है ऐसा, अज्यूमिंग, तो क्या उससे आपको लगता है कि फ़र्क पड़ सकता है इन चेंजिंग द माइंडसेट्स एंड हाउ पीपल लुक एट द पुअर इन देयर ओन सिटी एंड थिंग्स लाइक दैट? या काफ़ी मीडिया का रोल तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इट इज़ सच अ पावरफुल मीडिया। रेडियो को भी बहुत बढ़ाना चाहिए। अभी रेडियो ठंडा हो गया है, पर वो है, अब लिटरेसी बढ़ी है, तो पेपर्स भी बहुत बढ़ाना चाहिए। ये जो कंपनी का ये कॉरपोरेट की जो गुलामी है ना, क्योंकि ये सारा टाइम वही खरीद लेते हैं और फिर क्या मैसेज देते हैं। तो चाहे आई मीन कॉरपोरेट्स को हम कि उनके मन में बदलाव लावे, तो लेकिन वो तो शायद नहीं हो पाता। तो किस तरह से मीडिया को सस्ता सामान्य क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम खर्चे से हो सकता है। कैसे इसको इन ट्रैप्स को ये तो मीडिया तो एक ऐसा साधन है ना, छुरी जैसा है। और छुरी किसके हाथ में है? मर्डरर के हाथ में है या कोई सर्जन के हाथ में है, इसके ऊपर आधार। तो आखिर में तो हम लोग के खुद की नीतिमत्ता, मॉरल वैल्यूज क्या है, उसी के ऊपर ही आधार है। नहीं तो किसी भी चीज़ सोने को भी फिर लोखंड बना देते अगर वैल्यूज नहीं है तो। पर वैल्यूज का क्या आप अब सोचते हैं इस तो समय में? मार्केट डोमिनेटेड, हर चीज़ बेचो, हर चीज़, कोई चीज़, बस सारा बस हमें चिंता ही होती कि हर चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे उसी को बेचा जाए, उसमें से कैसे पैसा बनाया जाए। मानस पर विश्वास नहीं रहा ना। अगर भरोसा नहीं रहा एक दूसरे के ऊपर, तो वो समाज टिकने में भी बहुत मुश्किल है। और हर कोई डरे हुए है। तो हर कम्युनिटी अपने अपने डिफेंस के लिए कई प्रकार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इवन ब्राह्मण मंडल और ब्राह्मण समाज भी अपनी हमें बाहर निकल के मांग रहे हैं अधिकार। ये ज़्यादा बंटवारा जैसा ही हो रहा है। और भी एक्चुअली वही मुझे लग रहा था, जैसे कि आप जो अधिकतर देखते हैं कि जिस चीज़ को चेंज करने के लिए आप उतरते हैं, कई बार आपका खतरा सबसे बड़ा ये रहता है कि आप उसी की ट्रैप में फंस जाएं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एक संस्था बनाने का, यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी, एक जैसे आप कह रहे थे कि एक पुलिस विभाग है, तो वो वैसे क्यों नहीं काम कर सकता एज पर रूल्स? ऐसे पे हम क्यों आश्रित होंगे कि एक कोई पुलिस वाला अफसर अच्छा निकल गया? पुलिस वालों के हाथ में से डंडा ले लो। They don't need a डंडा। Most of the crimes can be dealt without डंडा। सबसे बड़ा डंडा तो बुद्धि में है। तो अगर इंफॉर्मेशन, अगर अपनी बुद्धि चलाए और फिर पहले से फोरकास्ट भी हो सकता है। कई ऐसी जो बुराइयां हैं, वो पुलिस तो लोकल है, उसी को तो मालूम होती है। आपको मैंने तो लिखा भी है, अभी पुलिस रिफॉर्म्स का ये चल रहा है, उसमें पर सब लोग हंस डालेंगे ना, मोस्ट ऑफ पीपल की नहीं। पुलिस को और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा इक्विप करो, और भी ज़्यादा लेटेस्ट वेपन्स जो गुंडों के पास है उसमें इनके ऐसे दिए जाए, और ट्रेनिंग करो। पर ये जैसे आपका जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें does it come as a challenge? Did it finally you becoming a mouthpiece of the same thing that you revolted against? उनसे डील करना। बहुत इंस्टीट्यूशन भी तो कोई आसान बात नहीं है, और नॉर्म्स तो चाहिए, और फिर नॉर्म्स के मुताबिक कि अगर नॉर्म्स बनाए तो हमने खुद बनाए, तो हमें ही उसका पालन तो करना है। वो डिसिप्लिन के सिवा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। पर ये भी ज़रूरी है कि समय समय पर जो चेंज आ रहा है
वो समझना, उसे उसके मुताबिक ढालना। फिर आई मीन अपनी इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटजीज रखना और सतत हम लगातार अपने मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में रहना, उन वहाँ पर आई मीन वहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या सच है क्या गलत है, ये सब इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है।